Modern way of life not only affects our perception of the world but also brings about change in markers of one's identity. The whole edifice of modern economy, politics, administration and education is dependent upon proper documentation of every sphere of life. बच्चा पैदा होता है तो 3 days के अंदर अंदर बच्चे का नाम रखा जाता है। अगर मैं रजिस्ट्रेशन ना करूं तो मेरा कोई पहचान नहीं होगा ना। This is every child's right to be identified and counted. बच्चे के वजूद को सरकारी सतह पर तस्लीम करने के लिए इंदराज पैदाइश पहला स्टेप है। पैदाइश का इंदराज ना हो तो प्लानिंग कैसे की जाएगी? Despite its importance in the modern scheme of things, registration of childbirth in Gilgit Baltistan is still not on the priority list of parents. In addition, boys were preferred to get registered, but girls were totally ignored from this process. As a result, these children remain off the radar of planning in the government on the one hand and could not become part of mainstream economy and society on the other. They remain excluded in every domain of modern life. A hallmark of any civilized society is that it strives to protect its vulnerable sections by providing protection under the constitutions and required institutional mechanism. There is a dire need of promulgation of child-friendly and people-friendly laws regarding registration. At the same time, there is a need for introduction of a child protection and rights policy. The state of child protection and rights in Pakistan is not satisfactory, primarily because of weak delivery mechanism of the state and lack of research-based decision-making at the policy level. In order to address these issues, it is imperative to devise a mechanism that can get information directly from grassroots level communities and feed requisite information into decision-making bodies. It is with this purpose, Plan Pakistan, in partnership with the Aga Khan Rural Support Program, local government bodies and NADRA, has embarked upon a project of Every Child Counts in all the 7 districts of Gilgit Baltistan. The most devastated and the most backward area was Gilgit Baltistan. We went in 2011 and this was to establish a viable birth registration system through computers, training of the registration centers between secretaries of union councils and the municipal committee functionaries for registration of birth, sensitization of the government on using that birth registration data into their planning purposes. So it was SIDA through Plan Sweden that supported this endeavor and we are very thankful. The existing situation of birth registration in Gilgit Baltistan is also not very encouraging. पहले हम मैनुअल पे करते थे तो मैनुअल में कोई आगे पीछे गुम होने का खतरा होता था क्योंकि उसका खास रिकॉर्ड मेंटेन नहीं होता था ना। हमारे इलाके में खासकर गिलगित बल्तिस्तान में एक कल्चर ये था कि लोग डॉक्यूमेंट नहीं करते थे बच्चों की पैदाइश को, इसलिए बाद में भूल जाते थे कि हमारा बच्चा या हमारी बच्ची कब पैदा हुए थे। तो मौसमों के तनासुब से जो है कि अंदाज़ा करते थे कि जब ख़ज़ां का मौसम था, पत्ते गिर रहे थे तो मेरी बेटी पैदा हुई थी या गंदम की कटाई पे मेरा बेटा पैदा हुआ था। इस तरह के रेफरेंसेस होते थे जिससे पता नहीं होता था कि वो बच्चा या बच्ची कब पैदा हुआ है। With estimated total births in the year 2009 to 2011, which are 147,829, and out of which only 11,890 children have been registered in the Union Council offices. उनके पास वो लोग आते थे जिनको ज़रूरत पड़ती थी बर्थ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की, तो वो कुछ 100 में थे। This stumpy registration ratio is mainly due to the complicated registration process, non-existence of Union Council offices, lack of awareness in caregivers, utilization of birth certificate and lack of inclusion
of birth registration data in the planning processes. Under this project, Plan Pakistan aims to register the children who are missing from the database because of being unregistered. We set a target of 100,000 birth registration for the whole period of the project. But till December 2013, I'm happy to report that we registered over 153,000 births in the whole of Gilgit Baltistan, and that is 53% more than the set target. Their inclusion in national database will prove conducive for policies and decisions regarding social and legal rights and enacting laws to protect children in the region. AKRSP plays an important role of a catalyst and facilitator in complementing and supplementing the development and social welfare objectives of the governments, besides improving local capacities for self-governance and empowerment of local communities. When a development initiative resonates with the local needs and government requirements, then indigenous communities own it. This is well reflected in the case of a social mobilizer of AKRSP who has succeeded to register more than 500 children. His name is Arif Hussain. He is a 21-year-old volunteer resident of a remote village, Farano. According to Arif, सबसे पहले प्रोजेक्ट यहाँ पर लॉन्च हुआ था तो सबसे पहले यहाँ BRO गांचे उन्होंने यहाँ आया था, कुछ फार्म लेके आया था उन्होंने। यकीनी बात है कहीं भी कोई भी चीज़ नहीं आते हैं तो उसको समझना थोड़ा मुश्किल होता है। सबसे पहले तो कोई यहाँ ईद शीद या कोई भी तकरीबात होते हैं तो उस दौरान हम पूरे इज्तिमा में ये फार्म की अफादियत के बारे में हमने बताया था सर। बाद में हम घर घर जाके फार्म के अफादियत के बारे में लोगों को बताया सर, फार्म फिलअप किया सर। फार्म फिलअप करने के बाद यहाँ सेक्रेटरी के पास पहुँचते हैं तो मैं जाके घर घर जाके फार्म फिलअप तो करता हूँ, लेकिन जाके ख़ुद आके यहाँ दफ्तर में जमा करते हैं तो ज़ाहिरी बात है एट ए टाइम सेक्रेटरी पूरा फार्म पंच नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना सर। पंचिंग सिस्टम थोड़ा हार्ड है, वो उर्दू से हट कर है ना सर, इन पेज वाला उर्दू में जो लिखाई होता है वो थोड़ा हार्ड है तो वो एक अकेला पूरा काम नहीं कर सकता था। तो फिर मैं कंप्यूटर में थोड़ा पहले भी कंप्यूटर का काम किया हूँ तो फिर मैं इसके साथ यानी वो अगर दिन को करते हैं तो मैं रात को पंचिंग करता हूँ। Whereas National Database and Registration Authority, NADRA, has been assigned the responsibility to provide technical assistance in terms of computerized birth registration process and to build the required capacity of all Union Council secretaries on Civil Registration Management System CRMS in Gilgit Baltistan, while local government and rural development has provided human resources for birth registration, infrastructure, utilities and logistics in the Union Council offices. हम जो है अपने यूनियन काउंसिल ऑफिसेस इनको दे रहे हैं, हमारी स्ट्रेंथ जो है ना वो इनको सपोर्ट कर रही है। फॉर्म्स वगैरह का इशू करना, फिर वो डाटा कलेक्शन जो है पब्लिक के अंदर उसको फैलाने के बाद फिर वहाँ से वो डाटा जो है जो कुछ वहाँ हासिल हुआ है फिर वो किसी एक स्टेज तक उसको कंसोलिडेट करके उसको फिर जो है नादरा तक जो है ना उस स्टेज को पहुँचाना, ये हमारी यूनियन काउंसिल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। One of the major problems in registering children in Gilgit Baltistan is inaccessibility to the far-flung areas, especially when it comes to the region that remains cut off from the rest of the world because of harsh climatic conditions.
In order to reach out to the communities living in the far-flung areas of Gilgit Baltistan, Plan Pakistan has utilized modern means of communication such as print and electronic media, cable networks, radio and cellular services. It helped to disseminate messages about birth registration and created awareness among the communities that are not directly accessible. अभी हमारे घर के दरवाजे में जो है हर एक बच्चा हो जो 18 साल से उम्र कम हो उनको जो है यहाँ पर डे फार्म मुहैया हो गया तो इससे आसानी और क्या चाहिए बीइंग एज ए पेरेंट मैंने खुद अपने बच्चों का भी जो फॉर्म आपकी तरफ से मिला था उसको हमने फिल किया और स्कूल में हमने जमा कर दिया और जमा करने के बाद हमें जो है ना वो हमें फॉर्म मिला और आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास तमाम मेरे बच्चों के जो है ना वो बर्थ सर्टिफिकेट मौजूद हैं। अभी माशाल्लाह से ये है कि बच्चा पैदा होता है साथ रजिस्टर होता है तब से ही एक उसको आइडेंटिटी मिल रही होती है। अब हमें अपनी आइडेंटिटी लेने के लिए 18 इयर्स वेट नहीं करना पड़ रहा है। We believe that in the long run, when this project comes to an end, these communities, one in the process, will get the due awareness that indeed is an important right of children, and that even without project support, we really hope that communities will take this idea forward. Universal Birth Registration Project is a journey from the anonymity in limbo to recognition of identity officially. Only by ascertaining who I am, I become a part of the human community.